Good morning, students. I hope you all are fine and safe and studying hard. In today's class, we will continue the same chapter, that is chemical coordination and integration. In the previous class, we have studied about the human endocrine system. Then in this system, we have studied about the part of brain that control on this system is hypothalamus. Then we have studied about the pituitary master gland pituitary because it controls all the other glands of our body. And then in this pituitary, we will study the different hormones which are secreted by pituitary and then different parts of pituitary which secrete particular hormone with their functions. Now, in today's class, we will see some more glands, some more endocrine glands which are situated. We will see the location, function, secreting hormones of pineal gland today. Then we will see the thyroid gland and parathyroid gland. So this all three glands we will study in today's class. And let's start with the pineal gland. I just want to show you the location. This pineal gland, see, this pineal gland is located in the dorsal side of the forebrain. जो cerebrum का part है उसके dorsal side पर situated है. पिनियल ग्लैंड को अगर हम देखते हैं what hormones secreted by this pineal gland. So pineal gland secretes the hormone melatonin. See, melanin is the skin pigment, the pigment which is responsible for skin color. So this gland automatically, the name indicate melatonin means it controls the pigmentation present in our skin, in our body. So if other functions are also there, that melatonin plays very important role in 24-hour diurnal rhythm of our body. And this is also called circadian rhythm. Means हमारा जो sleep wake cycle होता है उसको control करता है. Then what is the sleeping, suppose आपको रात को 10 बजे नींद आती है, आप सोते हो, तो 10 बजे से लेके मॉर्निंग में 4 o'clock तक, 5 o'clock तक, एंड देन जो आपका डे नाइट साइकिल है बेसिकली उसको हम सर्काडियन रिदम, जिसमें बॉडी का टेम्परेचर भी आता है, उसको मेंटेन करता है मेलाटोनिन. इट मेंटेन्स आवर स्लीप वेक साइकिल, body temperature. In addition to these two functions, it is also responsible for our metabolism पे भी इफेक्ट है, जो बॉडी में केमिकल रिएक्शंस है, एंड पिगमेंटेशंस, प्लस जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल्स में उसको भी ये अफेक्ट करता है. प्लस हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी हमें डिफेंस कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करता है ये ग्लैंड. वेरी स्मॉल ग्लैंड सिचुएटेड इन आवर ब्रेन. Basic one hormone melatonin released by this that control our sleep wake cycle. कुछ रिपोर्ट्स भी हमने मतलब I have seen one report also कि yes, this gland is activated in the morning hours. जो हमारे morning hours है 4 o'clock 3 o'clock में ये gland activate है और ये hormones को release करती है. Although there are not much scientific proofs, इसलिए वो हमारे text में included नहीं है. I'm just sharing my information. This pineal gland is responsible for that, when हम meditation करते हैं, yoga करते हैं, तो ये gland activate होता है. When this gland is activated in brain, तो ये melatonin release करता है, जो हमारे body temperature, metabolism है, हमारे immune system है, हमारी concentration power को enhance करता है. So this I have studied in one of the research paper, but still without any scientific proofs we can't say that. But the basic function of this gland is to maintain the 24 sleep hours sleep wake cycle, pigmentation, body temperature, defense capability, and menstrual cycle in females. Now we are moving to the next gland, that is thyroid gland. Very important gland.
every person these days is aware with this thyroid. See, so this thyroid gland, अगर हम इस ग्लैंड का लोकेशन देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, तो दिस ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ टू लोब्स, दो लोब से मिलकर बना हुआ ग्लैंड है, जो हमारे विंड पाइप के दोनों साइड्स पे सिचुएटेड होता है. आई जस्ट वांट टू शो यू, ये बैक साइड है थायराइड ग्लैंड का. सो दिस ग्लैंड इज सिचुएटेड that on the both either side of the trachea or our windpipe, जो नेक में windpipe रन करता है, उसमें ये ग्लैंड सिचुएटेड है. और दिस ग्लैंड इज फॉर्म्ड बाय टू लोब्स, दिस इज राइट लोब, दिस इज लेफ्ट लोब, और ये दोनों एक कनेक्टिव टिश्यू से, आप देखो यहाँ आई एम जस्ट मार्किंग दिस विद द हेल्प ऑफ मार्कर, जो ये टिश्यू है, दिस टिश्यू जो कनेक्ट कर रहा है दोनों लोब्स को, दैट इज कॉल्ड isthmus. That tissue is called isthmus. And thyroid gland जो है, अगर हम इसका structural part if we see, it is formed by follicles and stroma tissue. जो इसका internal structures जो present है इसमें, follicles and stroma tissue. Follicles में follicle cells हैं. These follicle cells are responsible for the production of hormones. So follicular cells जो present है thyroid gland में, they are releasing two type of hormones. हमने बहुत common language में सुना हुआ है that T3 and T4 बोलते हैं. तो T3 means triiodothyronine, and that T4 is tetraiodothyronine, and this is also called thyroxine, जो common बोला जाता है. But this earlier you have studied that thyroid gland release the hormone thyroxine, that is T4. But in 11th standard you have to be more specific about this these particular hormones released by thyroid gland. So T3 triiodothyronine and tetraiodothyronine release करते हैं follicular cells जो पार्ट है थायराइड ग्लैंड का. इसके अलावा बच्चे एक प्रोटीन हार्मोन भी होता है, प्रोटीनियस हार्मोन इज आल्सो सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड, जिसको हम टीसीटी बोलते हैं, मींस थायरोकैल्सिटोनिन. थायरोकैल्सिटोनिन एक प्रोटीनियस हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड रिलीज कर रही है, एंड ये हमारे ब्लड में कैल्शियम बैलेंस और कैल्शियम के बैलेंस को, लेवल्स को रेगुलेट करता है. So let's talk about these two hormones, triiodothyronine and tetraiodothyronine. Iodine, we know that iodine is essential for normal rate of hormone synthesis in our thyroid gland. अगर body में आयोडीन की लैकिंग है तो ये हार्मोन्स प्रॉपरली नहीं फॉर्म होंगे, क्योंकि इन हार्मोन्स के केमिकल स्ट्रक्चर में जो बेसिक कंपोनेंट है वो आयोडीन है. So that's why iodine is essential for the maintenance of this thyroid gland. So the gland has to produce a regulated amount of thyroid hormones T3 and T4. Iodine ka source, we know that that iodized salt is the source of our this iodine. हमें salt से iodine मिलता है. Now let's see the deficiency. As I told you, ये हार्मोन्स जितने भी हैं बॉडी में ग्लैंड्स रिलीज करते हैं, सभी हार्मोन्स एक मिनिमम बहुत स्मॉल क्वांटिटी में रिलीज होते हैं, बट इनका बॉडी पे इफेक्ट, जो बॉडी की फिजियोलॉजी है एज वेल एज बॉडी की मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस पे अफेक्ट करते हैं, और वो अफेक्ट जो है वो दिखाई भी देता है. Like hypothyroidism. Hypo means less. That when the thyroxine or T3, T4 are releasing in less quantity because of lack of iodine. So that disease is called hypothyroidism or goiter. Goiter में बच्चे क्या है? You can see this picture. जो gland है वो swelled up हो जाती है. Neck area में situated gland thyroid में swelling हो जाती है, जिसको हम goiter disease का नेम देते हैं, and this is due to lack of thyroid hormones. Symptoms क्या है? Stunted growth. Stunted growth means cretinism. बच्चे यहाँ पे ये मार्क करना बहुत जरूरी है. Many time question is there. What's the difference between cretinism and dwarfism? दोनों में ही स्टंटेड ग्रोथ है. तो ड्वार्फिज्म जो है वो कॉज करता है ग्रोथ हार्मोन की लैकिंग, और
क्रिटिनिज्म जो डिजीज है दैट इज कॉज्ड बाय लेस सिक्रीशन और लैक ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन इन आवर बॉडी। हाइपोथायरॉयडिज्म का जो प्रेगनेंसी के पीरियड में बहुत मेजर रोल होता है। अगर प्रेग्नेंट मदर हैविंग नॉट हैविंग अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ दिस थायरॉक्सिन हार्मोन, तो जो चाइल्ड है, जो फीटस है, उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट पे इफेक्ट होता है। उसी से क्रिटिनिज्म कॉज होता है। मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस, आईक्यू लेवल लो होता है ऐसे बच्चों का, एंड स्किन इज एबनॉर्मल, एंड डेफ म्यूटिज्म जो है, ये इस तरह के सिम्टम्स हैं जो प्रेग्नेंट मदर की बॉडी में लैक होने की वजह से उसके फीटस से चाइल्ड में अपीयर होते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस आयोडीन कंजम्पशन और बैलेंस ऑफ आयोडीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली ड्यूरिंग pregnancy period. Now it also affect the human female menstrual cycles। जो menstrual cycle है फीमेल में 28 days cycle है, जिसमें ओवरीज में प्रोसेसेस होते हैं, एग फॉर्मेशन है, गैमेट फॉर्मेशन है, देन रिलीज ऑफ एग ओव्यूलेशन है, देन फॉर मैच्योरेशन। सो दीज ऑल आर irregular processes under the lacking of the thyroxine hormone. So this is hypothyroidism, where the thyroxine hormone is less in our body. Now we will see the another condition। another condition क्या है? जब इस हार्मोन की क्वांटिटी ज्यादा हो गई, जो उसका रेगुलेटेड अमाउंट है उससे ज्यादा होने पे, हाइपर मीन्स मोर, when the production of thyroxine hormone, thyroid hormone is more, ज्यादा हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, then also the body shows various effect on physiological functions, that over secretion, जब gland over active है, excess of thyroid hormone body में आ रहा है, और इसका जो generally reason होता है बच्चे, that is the thyroid cancer, cancerous tumor like outgrowth हो जाती है, nodules form हो जाते हैं thyroid gland में जो cancerous है, वो इस condition को cause करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म को हम बच्चे एक्सपेथेल्मिक ग्वाइटर भी कहते हैं। एक्सपेथेल्मिक ग्वाइटर क्या होता है बच्चे? दैट एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ ग्वाइटर बोला जाता है ड्यू टू एक्सेस रिलीज ऑफ हार्मोन। इसमें बच्चे एक तो थायराइड ग्लैंड भी एनलार्ज हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, और जो बहुत मार्क्ड फीचर होता है, आई डोंट नो आपने इस तरह के पेशेंट कभी देखे हैं या नहीं देखे हैं, आप कभी एक्सपीरियंस करोगे कि कई बार जो है जो आईज के बॉल है ना, वो बच्चे बाहर की तरफ बल्ज हो जाते हैं। बल्जिंग, यू हैव सीन दैट कार्टून मूवीज में आई बॉल्स जो है वो बाहर आ जाते हैं, छोटे बच्चे इस तरह के कार्टून्स देखते हैं, तो दैट बल्जिंग, बहुत जो पेशेंट है ना एक्सपोथेल्मिक ग्वाइटर का, वो उसकी आईज से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो हमारे आई बॉल्स हैं ये बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो जाते हैं, बहुत क्लियरली विजिबल सिम्टम होता है हाइपरथायरॉयडिज्म का। एंड उनका जो बेसल मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अगर हाइपर कंडीशंस है, जिसकी वजह से एक्सेस मेटाबॉलिक रिएक्शंस और एक्सेस मेटाबॉलिक रेट की वजह से वेट लॉस होता है, पूरा का पूरा फूड कंपोनेंट यूज हो जाता है बॉडी में, वेट लॉस, और इस डिजीज को हम बच्चे ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं। तो यू हैव टू लर्न दी हाइपो कंडीशन ऑल्सो। हाइपो से ग्वाइटर होता है, प्रेग्नेंट वुमेन पे इफेक्ट आते हैं, चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे इफेक्ट होता है, और हाइपरथायरॉयडिज्म जिसमें जनरली कैंसेरियस कॉज है, एक्सोप्थेल्मिक गाइटर होता है जिसमें आईज बॉल प्रोट्रूड्स हो जाते हैं, और जो डिजीज होता है उसको हम कहते हैं ग्रेव्स डिजीज। हाइपो से क्रिटिनिज्म मिलता है बच्चों में, चाइल्ड ग्रोथ डेवलपमेंट में स्टंटेड ग्रोथ होती है। सो दिस इज हाइपो एंड हाइपर कंडीशन ऑफ थायराइड gland hormone. Now come to the functions of the thyroid gland, general functions. Although we have discussed these functions, it regulates the basic metabolism, बॉडी का जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म मेंटेन करती है, कंट्रोल करती है ये ग्लैंड विद द हेल्प ऑफ इट्स हार्मोन। इट आल्सो हेल्प्स एंड सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड फॉर्मेशन, रेड ब्लड सेल्स की जो फॉर्मेशन होती है उसको कंट्रोल करती है,
as well as it also controls the water and electrolyte balance in the body, जिसको osmoregulation भी कहते हैं. That is also controlled by this gland. And one more additional hormone secreted by this gland that we have already discussed, that thyrocalcitonin, जो एक proteinous hormone है, and it also regulates the blood calcium level. So now you can see that these glands having very widespread effect on our body. Their higher amount and their lower amount from the balance level is always causing uh, deficiency, uh, many type of deficiencies, as well as many physiological functions are blocked or affected by the uh, hyper and hypo condition of these hormones. Now immediately I am moving on to the next gland, जो parathyroid gland है. Parathyroid gland, बच्चे, it is a gland that is situated in the two lobes जो है थायराइड के, उसी में प्रेजेंट है. ये थायराइड ग्लैंड है. उसके बैक पे ईच लोब में पेयर ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है. और दिस ग्लैंड रिलीज द पैराथायराइड हार्मोन, जिसको हम कॉमनली पीटीएच भी बोलते हैं बच्चे. इट इज ऑल्सो ए पेप्टाइड हार्मोन, PTH, parathyroid hormone, and this hormone regulates the circulating level of calcium ions in our blood. हमारे blood में जो calcium का level है उसको maintain करता है. और this hormone, there are many this parathormone or PTH increase the calcium level in the blood. It acts on our bones and stimulate the process of bone resorption, यानी demineralization or dissolution. It also stimulates reabsorption of calcium by renal tubule, जो kidneys में reabsorption होता है calcium का, उसको increase करते हैं. Plus it also increases the absorption of calcium from our digested food. Thus ये clear हो जाता है that PTH जो है एक हाइपरकैल्सिमिक हार्मोन है, जो हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है. एंड इट ऑल्सो वर्क्स विद द TCT, जो कि थायरोकैल्सिटोनिन प्रोटीनियस हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड रिलीज करती है. TCT और PTH ये दोनों मिलके हमारे ब्लड में कैल्शियम बैलेंस को maintain करते हैं. So this is all about the parathyroid gland, and the other glands we will see in the next class. Thank you, students.